Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for grade 2. We are going to start unit 2. Its title is Virtues Pay Off. So I'm going to tell you SLO based lecture division for this unit, and then we'll understand what this story is all about. So in lecture 1, under the title of grammar, we'll learn about singular plural naming words, and we'll cover the SLO, recognize and change the number of simple naming words by adding or removing S and ES. In lecture 2, under the title of grammar, we'll learn about masculine and feminine, and we'll cover the SLO to identify and classify gender of naming words from immediate environment, masculine, feminine. Lecture 3, under the title of language focus, we learn about initial sound of a word, and we'll cover the SLO to pronounce and match the initial and final. Final we'll do next day, so our focus will be initial sound for this lecture. Initial sound of common words depicted pictures with their corresponding letters. In lecture 4, again under the title of language focus, we'll learn about ending sound of words, and we'll cover the SLO to pronounce and match the initial we have already done. So we'll focus on final sound of common words depicted pictures with their corresponding letters. Lecture 5, we'll start reading and understanding the story. We'll cover the SLO to read aloud the same story, fairy tale themselves, listen to a story or fairy tale of a few sentences read aloud by a teacher. So first teacher will read, then students will read by themselves. Use pre-reading strategies to predict story by looking at pictures in the text. In lecture 6, we'll continue reading and understanding the story, and we'll cover the SLO, read aloud the same story or fairy tale by themselves, and listen to a story or fairy tale of few sentences read aloud by the teacher. So teacher first, and then student, they will read the story. Lecture 7, we'll complete the comprehension, and we'll cover the SLO. Use first and second letter to arrange words in alphabetical order. Express understanding of story through pantomime and simple role play. In lecture 8, we'll learn under the title of listening and speaking, introduce yourself, and we'll cover the SLO. Articulate and recognize use of some formulaic expressions to introduce self and talk about family. And lecture 9, under the title of writing, we learn to trace and write simple sentences and numbers 1 to 50 in words. And we'll cover the SLO, trace and write simple one-syllable words with correct spelling, leave regular spaces between words, and write numbers from 1 to 50 in words. So my dear students, my dear fellow teachers, this is the SLO based lecture division for this unit. Now let's understand what this unit is all about. So the first is the title of the story, Virtues Pay Off. Yes my dear students, virtues का क्या मतलब है? तमाम नेकी के काम, जो भी नेकी हम करते हैं, pay off, उसका आपको अजर मिलता है. सो ये अजर जो है ना बेटा, ये 2 तरह का होता है. हम जो भी नेकी करते हैं, एक उसका सिला हमें दुनिया में मिलता है, और एक इंशाल्लाह हमें उसका आखिरत में भी मिलेगा. तो जब भी कोई अच्छा काम हम करते हैं, सबसे पहले अपनी नीयत को खालिस करें कि हम ये काम लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे कि हम बहुत अच्छे हैं. हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे अल्लाह ताला हमसे खुश होंगे और हमें दुनिया में भी इसका अजर देंगे और आखिरत में भी इंशाल्लाह. तो अब देखते हैं कि स्टोरी क्या है. One day an ant stopped at a river bank to drink some water. बेटा कुछ स्टोरीज होती हैं, इनको फेरी टेल्स कहते हैं. मतलब ये हम मे बी एक्चुअली ऐसा वाक़या कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर एक कहानी बनाई गई है ताकि हम उससे कुछ अच्छा सीख सकें.
ठीक है। तो एक चींटी जो है वो दरिया के किनारे पानी पीने के लिए गई और he got too close and fell in the river. तो क्या हुआ, वो क्योंकि पानी के बहुत क्लोज गई और आपको पता है चींटी कितनी छोटी सी होती है, वो स्लिप होकर पानी में चली गई. He was about to drown when a dove saw him. वो डूबने ही वाली थी कि एक फाख्ता ने उसको देख लिया. अब देखें, यहाँ से हमारे लिए मैसेज ये है कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें कि कोई मुश्किल में मुसीबत में तो नहीं है, और अगर है तो क्या करना है, जो फाख्ता ने किया फौरन उसकी मदद के लिए भागे. उसने क्या किया, the dove tore off a leaf and dropped into the river next to the ant. उसने दरख्त का एक पत्ता तोड़ा अपनी चोंच में और जाके उस चींटी के करीब पानी में रख दिया. अब उसने क्या किया, the ant climbed onto the leaf and survived. वो जंप करके पत्ते पे बैठ गई और वो बच गई, उसकी जिंदगी बच गई, वो डूबने से बच गई. थैंक यू डव. जब कोई आपकी मदद करे तो क्या कहते हैं, थैंक यू. ओके, तो उस चींटी ने भी फाख्ता का शुक्रिया अदा किया और फिर क्या कहा, आई विल ऑलवेज रिमेंबर व्हाट यू डिड फॉर मी. ओके, तो जब कोई आपकी हेल्प करे, आपके लिए कोई अच्छा काम करे, उसको हमेशा याद रखते हैं. ये नहीं कि आज किसी ने आपकी मदद की कल आप भूल जाए, अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं. नो बेटा, जब कोई हमारी मदद करता है तो फिर हमारा भी फ़र्ज़ है उसकी मदद करें. यही उस चींटी ने किया. One day the ant saw a man. He was pointing his gun at the dove. उसने क्या देखा कि एक शिकारी है और वो अपनी गन पॉइंट कर रहा है डव के ऊपर. The man was going to pull the trigger. ट्रिगर क्या होता है, जो गन के ऊपर बना होता है, एक छोटा सा बटन होता है, उसको प्रेस करने से उसमें से गोली निकलती है. तो वो अभी वो गोली चलाने ही वाला था. At the very last moment, the ant had an idea. वो अब ये चींटी की सारा कुछ देख रही थी और उसको एक आइडिया आया. क्या किया उसने, he bit the man's leg. उसने उस आदमी की टांग के ऊपर काट लिया. Ouch! The man yelled. वो आदमी जो था उसने ouch और and missed the dove. उसने ouch किया और उसकी गन हिल गई और वो गोली डव को नहीं लगी. The dove flew off and waved a thank you to the ant. वो जो डव थी उसने भी एंट को थैंक यू बोला for saving his life. And we learn from the lesson, do good, have good. Right, very simple. But it's not that simple, beta. We should help other. We should help everyone. Whatever. अब देखिए उस चींटी ने ये तो नहीं सोचा कि मैं तो इतनी छोटी हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ. इसने फ़ौरन से उसकी हेल्प करने के बारे में सोचा और वो उसमें कामयाब हो गई. इसलिए बेटा हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं तो फिर हमारे साथ भी अच्छा ही होता है. ये हमें इस स्टोरी से लेसन मिलता है. और हमारे कुरान ने भी हमें ये सिखाया है, if anyone does deeds of righteousness, be they male or female, and have faith, they will enter heaven, and not the least injustice will be done to them. Allah says in Quran, Surah 4 verse 124. क्या अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो भी मर्द औरत छोटा बड़ा जो भी है, जब वो कोई अच्छा काम करता है तो अल्लाह ताला उसको इनाम देंगे. और वो इनाम क्या है, जन्नत, हेवन. और बेटा इससे बड़ा तो कोई भी इनाम नहीं है. इसलिए हम जो भी काम करें उसको अच्छे तरीके से करें, अच्छी नीयत से करें, और इस नीयत से करें कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं. इस नीयत से नहीं कि लोग हमें कहें कितना अच्छा. हाँ अलबत्ता लोग भी कहें तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों को दिखाने के लिए अच्छे नहीं बने, हम अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए अच्छे बने. तो उसका नतीजा क्या है, उसका इनाम क्या है, जन्नत इंशाल्लाह. सो दैट्स इट फॉर टुडे. कल इंशाल्लाह हम इस यूनिट के ग्रामर के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे. जो भी अच्छी बातें आज आपने सीखी हैं घर जाके अपने छोटे बहन भाइयों को बताइए और इन पे ख़ुद भी अमल करें और उनको भी अमल करने की तरगीब दें. दैट्स इट फॉर टुडे. टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ. कीप लर्निंग. थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़.